Hello everyone. Today we will discuss about lichens, commonly known as pioneer communities in case of succession, and they are also indicator of sulfur pollution in air. Our today's learning objectives are: we will discuss about general characters of lichens, then we will discuss about its classification and thallus structure, especially internal thallus structure of lichens. So let's start. First, we will discuss about its general characters, general introduction. So they are small group of composite or dual organism. Dual organism, it means कि ये जो lichens हैं they are made up of two groups of organisms. इसमें जो एक group है that is algal group and other group is the fungal group. Almost 17,000 to 20,000 species lichens की रिपोर्ट की जा चुकी हैं आज तक. और जो lichen है, as I have already told, that is a combination of two different members. एक जो इसमें member होता है that is the fungal member, और जो other member है that is the algal member. जो algal component होता है उसको commonly कहा जाता है photobiont और phycobiont. Why photobiont? Because this algal component helps in the process of photosynthesis. Or phycology, as we all know, it's the study of algae, so that's why this is known as phycobiont, while the fungal component is known as mycobiont. So ये terminology use की जाती है components के लिए lichens के. जो fungal component है वो belong करते हैं different classes of fungi like ascomycetes, ascolichens कहा जाता है उनको, because इसमें जो dominant role play किया जाता है that is by the fungal partner because it plays a role in reproduction, sexual reproduction. और जो कुछ एक fungal members हैं इसमें basidiomycetes से, और उनको कहा जाता है basidiolichens, and some are from the deuteriomycetes जिसको कि commonly कहा जाता है fungi imperfecti, और ये जो lichens हैं इनको कहा जाता है deuteriolichens. So on the basis of fungal component हम lichens को different categories में divide करते हैं like ascolichens, basidiolichens and deuteriolichens. 26 genera algae के report किए गए हैं आज तक lichens में. So algal components के 26 genres report किए गए हैं lichens में, और out of 26, 17 genres belongs to chlorophyllaceae. So जो green algae है chlorophyllaceae में आती हैं सारी सारी green algaes. So उसमें से 17 genres report किए गए हैं. 8 genres from cyanophyceae, that is BGA, blue green algae. They are also known as cyanobacterias, and one is from xanthophyceae, that is the yellow green algae, और उस algae का नाम है Hydrococcus. Then most of the algal members are unicellular, but few are filamentous. इसमें जो algal members होते हैं lichens में mostly they are unicellular, single celled होते हैं, but few are filamentous, means thread like. So जो green algae के members हैं lichens में जो present होते हैं वो हैं Triboxia, Trentifolia, Cocomixa. Out of these, the Triboxia है that is the most frequently occurring algal member in case of lichens. So Triboxia most common photobiont है lichens में. जो blue green algae हैं associated होती हैं to form lichens, उसमें आते हैं हमारे पास genera like Nostoc, Cytonema, Stigonyma, Gleocapsa and Calothrix. So these are some most common blue green algae which are found in case of lichens. The person named as Eric Acarius is known as father of lichenology. Lichenology is the
branch of botany, we can say, in which we study about lichens, and the father of lichenology is Eric Acarius. Lichenology, the branch of science which deals with the study of lichens. और जो term lichen it was first coined by father of botany, that is Theophrastus, a scientist who has specialized in the study of lichens or who studies about lichen is commonly known as lichenologist. Then there was a term which is most frequently used in case of lichens, that is symbiosis. Symbiosis means in which two different organisms lives together and they are fully dependent upon each other. So that is also sometimes we use other term, that is mutualism, in place of symbiosis. So this symbiosis term was given by D. Berry. In case of lichens, जो algal partner है, it helps in photosynthesis, and the fungal partner helps in absorption, and they both lives together, और इसलिए इस तरह की रिलेशनशिप को symbiosis और mutualism भी कहा जाता है. Symbiosis is used to describe the intimate association between two distantly, means different, related species that are mutually benefiting from this association, जिसमें दोनों ही partner benefit लेते हैं. So इस तरह की जो association है, that is known as symbiosis. In lichens, symbiotic association can be seen between algae and fungi that we have discussed, and some scientists have view that this type of symbiosis is helotism. There is one term, helotism. Helotism means master or slave relationship, जिसमें एक जो component है, that is master, means dominating है वो, और जो दूसरा component है, that is slave, that will run according to the command of master. Some scientists have this view that this type of relationship is helotism, master-slave relationship. Next, habitat. Mostly जो lichens हैं, they prefer to grow in cool temperature and pollution-free environment and places with enough humidity and moderate rain, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, पॉल्यूशन फ्री एयर होती है, और जो स्पेसेस जहाँ पे प्लेसेस में ह्यूमिडिटी काफ़ी रहती है और मॉडरेट रेनफॉल होता है, तो उन कंडीशंस में मोस्टली लाइकन्स ग्रो करते हैं. दे कैन ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स. हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्री ट्रंक्स में, लीव्स में, सॉइल सरफेस पे और बेयर रॉक्स पे. बेयर रॉक्स पे ग्रो करते हैं, सो दैट्स वाई दे आर द फर्स्ट communities to grow on the bare areas. That's why these are known as pioneer communities in case of succession that we will discuss in ecology. So on the basis of habitat is the address of an organism. जहाँ पे कोई organism रहता है, उस place को हम उसका habitat बोलते हैं. So on the basis of habitat, lichens को हम classify करते हैं different categories में. So first one is Saxicolous. So these lichens prefer to grow on the rock surfaces or stones. So ऐसे lichen जो rock surfaces और stones के ऊपर grow करते हैं, these are known as Saxicolous lichens. Next is Corticolous. These lichens grow on tree barks. Tree bark में grow करते हैं. Next is Folicocolous. Folicos term related to leaves. So ये जो lichens हैं, they grow on the leaf surfaces of trees. Then Terricolous. These are the lichens which grow on the soil surface. Next, there are some species of lichens which are aquatic. For example, there is a genre named as Peltigera. Some species of Peltigera, they grow in the marine water. So this is marine. Then there is one lichen, that is Cladonia rangifera. Rangiferina. Cladonia rangiferina, commonly known as reindeer moss. It grows luxuriously in tundra. So tundra are the polar regions जहाँ पे snow covered रहता है land surface throughout the year. So वहाँ पे ये जो lichen है grow करता है. This is commonly known as reindeer moss. Next, structure of thallus in lichens. So जो plant body है lichens की,
ये थैलॉइड है. दिस टर्म वी हैव यूज्ड many times. थैलॉइड होती है ऐसी प्लांट बॉडी that cannot be differentiated into true root, stem or leaves. लाइकन्स के केस में भी प्लांट बॉडी थैलॉइड है, और इस जो थैलॉइड बॉडी है इट हैज़ डिफरेंट शेप्स. Mostly some appear like a crust on the soil rock surface, जैसा कि ये पिक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे. This is the picture of Lichens. We will discuss it one by one in upcoming slides. Mostly these are gray in color or grayish green in color, but some are red, yellow, orange or brown in color. So it shows variety in its color. Then types of thallus. On the basis of appearance of thallus को हम different categories में divide करते हैं. So first one is crustose. As the name indicate, ये जो lichens हैं it appear as crust on the rock surface. So thallus is inconspicuous. Prominent thallus नहीं होता है इसमें, flat होता है और appear as a thin layer or crust on the substratum like bark, stone or rocks. Substratum means जिसके ऊपर ये lichen grow कर रहा है उसको हम substratum कहते हैं. So it appears as a thin layer or crust on the substratum. और जो substratum है that may be bark, stones or rock. Next, they are either wholly or partially embedded in the substratum. And जो fruiting bodies होती हैं, if they are completely embedded means they lives inside the substratum. So सिर्फ जो fruiting bodies हैं इनकी they will appear, they are visible above the substratum. For example, we have different genres, like in this picture we can see here this black tar lichen is known as Verrucaria. This is the Verrucaria. This is also known as black tar lichen. The next is Graphis, this one. This one is Graphis. It appears a crust on the substratum. Then we have next is Lichenora. In this picture we can see here Lichenora. In previous picture we have seen this Lichenora. Then the next is Rhizocarpon. This one. It is slightly greenish in color. So these are some examples of crustose lichens. They appear as a crust on the substratum. So that's why these are known as crustose lichens. The next form is Folios form. As the name indicate, Folios means leaf. So ये जो thallus होता है इसका it appears like a leaf. These are leaf-like lichens. और जो thallus होता है इसका flat होता है, horizontally spreading and with lobes. इसमें lobes present होते हैं that we can see in picture. Some parts of thallus are attached with substratum. और ये जो attachment होती है these are with the help of some root-like structures जिनको कहा जाता है rhizines. So कुछ एक hyphal, fungal hyphae grow करते हैं, substrate में penetrate करेंगे and they plays the role of roots, और इनके लिए term use की जाती है rhizines. They are developed from the lower surface of the thallus. So these are some pictures of Folios lichens. This is the Parmelia that we can commonly found on tree trunks or on the rock surfaces. और इसमें जो इसके टिप्स में होते हैं lobes और ये horizontally spread करता है substratum के ऊपर. इसके lower portion से कुछ एक roots like structures निकलते हैं जिनको कहा जाता है rhizines. So this is the picture of Parmelia. The next is Peltigera, commonly known as dog lichen. This one is Physia, and this last one is Anataichia. So these are some pictures of Folios lichen. इनको Folios क्यों कहा जाता है? Because इसकी जो appearance है वो है leaf की तरह. So that's why these are known as Folios lichens. Next are Fruticos. ये जो lichens हैं they bear some sort of fruiting bodies. So these are shrub-like, और इनके जो thalli होते हैं they are well developed, cylindrical होते हैं, branched होते हैं. Shrub-like either grow erect और या फिर ये hang करते हैं from the substratum. For example, जो erect growth show करता है
अपराइट ग्रोथ शो करता है, एग्जाम्पल इज क्लेडोनिया। और जो सबस्ट्रेटम से हैंग करते हैं, देयर इज लाइक असनिंग, so they are attached with the substratum by a structure which is known as basal disc. डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, जिससे ये सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच करते हैं खुद को। एंड द एग्जांपल्स आर, दिस इज क्लेडोनिया, ये ग्रो करता है अपराइट डायरेक्शन में। then this is asnia, it hangs down like this one, in this picture we can see here, ये हैंग करते हैं सबस्ट्रेटम के सरफेस के ऊपर से, और ये खुद को अटैच करते हैं इसके सरफेस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ सम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है बेसल डिस्क। सो दिस इज द फर्स्ट पिक्चर which is the picture of cladonia. The next is asnia, then Ivernia, and finally Electonia. ये जो Ivernia है, और there are some other lichens like Ramalina. These are most commonly used in making perfumes and havan samagris. Next is filamentous lichens. As the name indicates, these are filaments-like or thread-like structures होते हैं इसके. So in this type, जो algal members हैं वो filamentous होते हैं. They are well developed, so they are dominating. जो algal filaments हैं, they are covered only by a few fungal hyphae. So इसमें जो main thread-like structures हैं, filaments हैं, they are of algae. Algal components ज़्यादा dominating है इसमें. और these algal filaments are surrounded by or covered by some fungal hyphae. So this is the picture of filamentous algae, lichen, और इसका नाम है रेकोडियम. This is the picture of रेकोडियम. इसमें जो algal member है, that is dominant, that I have already told you. और filament की तरह इसकी appearance है, that's why this is known as filamentous type. और इसमें जो examples है, रेकोडियम है, एफेबे है, and Cystocilus. So these are some examples of filamentous lichens. So the next form is leprose form. This is the simplest form of lichens. और इसमें जो फंगल हाइफे हैं वो एनवेल्प करते हैं सिंगल और स्मॉल क्लस्टर ऑफ एल्गल सेल्स को. बट ये जो एल्गल सेल्स हैं, दीज सेल्स डज नॉट एनवेल्प ऑल ओवर बाय द फंगल. सभी तरफ से कवर नहीं होते हैं ये फंगल हाइफे से. सपोज दिस इज एल्गल सेल, इट इज़ कवर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोर्शन बाय द फंगल हाइफे. और ये जो लाइकन्स हैं, दे अपीयर एज पाउडरी मासेस ऑन द सबस्ट्रेटम, जैसे पाउडरी मास की तरह अपीयर होते हैं सबस्ट्रेटम के ऊपर. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लेप्रोज फॉर्म. और इसमें जो एग्जांपल है, दैट इज लेपरेरिया इनकैना. सो दिस इज द एग्जांपल. द नेक्स्ट फॉर्म इज स्क्वैमुलोज लाइकन्स. ये जो लाइकन्स हैं, these lichens are scale-like or composed of many lobes or squamules. But कुछ एक जो scientists हैं, they put these lichens under crustose form of lichens. So this is the picture of leprose form of lichen. This is Leparia incana. So it appears as a powdery mass on the substratum. So this picture shows the leprose form of lichens, that is Leparia incana. The next, the very important one, is internal structure of lichens. So based on distribution of algal component inside the thallus, जो lichens हैं वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में. दो तरह के हैं थैलस इसके. एक है होमो आइसोमेरस और इसी को आता है होमोमेरस, and second one is heteromerous. As the name indicate, homo isomerous, homo means same. So इसके अंदर जो इस तरह के थैलस होते हैं, इनमें जो एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंगल हाइफे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, इक्वल्स. जबकि हेटेरोमेरस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं एल्गल और फंगल कंपोनेंट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह के थैलस structures होते हैं, internal thallus structures of lichens. So first we will discuss about homo isomerous. Here, the fungal hyphae and the algal cells are more or less uniformly distributed. दोनों ही uniformly equally distributed होते हैं throughout the thallus.
और जिसमें जो एल्गल मेंबर्स हैं दे बिलोंग्स टू डिवीजन साइनोफाइटा, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। सो ये एल्गल कंपोनेंट्स होते हैं इस तरह के थैलस में। और दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज़ फाउंड इन क्रस्टोज लाइकन, और ये पाई जाती है क्रस्टोज लाइकन्स में। एंड बोथ द पार्टनर्स इंटरमिंगल एंड फॉर्म द थिन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। इसमें दोनों ही फंगल और जो एल्गल पार्टनर है दे इंटरमिंगल, मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ और बनाते हैं एक पतली सी लेयर, आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर। और इसमें जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज़ लेप्टोजियम एंड कॉलिमा। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ होमो आइसोमेरस टाइप ऑफ थैलस। इसमें जो फंगल हाइफे हैं और जो एल्गल सेल्स हैं दे आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द थैलस। पूरे पूरे थैलस में दे आर यूनिफॉर्मली distributed. So that's why this is known as homoisomerous. Homo means same, iso means again same, merous distribution of algal and fungal components. The next is heteromerous. इसमें there is in this type of thallus there is distinction of different layers. So thallus is differentiated into distinct layers. So algal members जो होते हैं they are restricted to a particular zone जिसको कहा जाता है algal zone, और this type of orientation is found in advanced type of lichen जो है folios form, leaf like, और fruticos lichens, for example Physia and Parmelia. So this is the picture of Parmelia. So the different layers are, जो थैलस है वो डिफरेंशिएट होता है डिस्टिंक्ट लेयर्स में। जो लेयर्स हैं दे आर अपर कॉर्टेक्स, देन देयर इज एल्गल लेयर, मेडुला एंड लोअर कॉर्टेक्स। दैट विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन इज अपर कॉर्टेक्स। सो ये जो अपर कॉर्टेक्स है इट इज़ आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड इंटरवोवन फंगल हाइफे। सिर्फ फंगल हाइफो से बनी होती है, लोकेटेड एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके राइट एंगल में ये जो हाइफे हैं दे आर लोकेटेड the right angle to the fruiting body. So this is the picture of this heteroisomerous type of thallus. इसमें different zonations हैं, layers हैं. So first one is the cortex, that is the upper cortex. Then second layer is algal zone. Then third one is medulla, and then finally lower cortex that we'll discuss one by one. So firstly we are discussing about the upper cortex. It is made up of फंगल हाइफे, फंगल हाइफो से बनी होती है, और इनकी जो अरेंजमेंट है दे आर कम्पैक्टली अरेंज्ड इंटरवोवन हाइफे, मिक्सड होंगे हाइफे बहुत सारे, एंड दे आर लोकेटेड राइट एंगल टू द फ्रूटिंग बॉडी। जो फ्रूटिंग बॉडी है, सपोज दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, इसके राइट एंगल में प्रेजेंट होते हैं फंगल हाइफे। यूजुअली देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन द हाइफे, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, बट इफ प्रेजेंट दीज आर फिल्ड विद जिलेटिनस सब्सटेंसेस। अगर कोई स्पेस है भी तो वो फिल्ड होता है जिलेटिनस सब्सटेंसेस से। देन द अपर कॉर्टेक्स मे हैव माइन्यूट ब्रीदिंग पोर्स। इसमें कुछ एक स्मॉल स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वी डोंट कॉल देम स्टोमेटा, दे आर नोन एज ब्रीदिंग पोर्स, एंड दे हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज इन लाइकन्स। The next layer is the algal zone. So the algal cells are restricted to this zone only, और ये present होती है below, just below the upper cortex. Upper cortex से नीचे की तरफ present होता है algal zone. So in this picture we can see here this is the upper cortex and this zone is the algal zone. जो algae के cells हैं they are restricted to this zone only, that's why this is known as algal zone. और जो algal cells हैं they are entangled by the loosely interwoven fungal hyphae, और ये बाहर से entangled होते हैं fungal hyphae से. And the most common algal members may belongs to Cyanophyta, that is BGA, like in case of lichen peltigera, and these lichens जो ये blue green algae है जो present होती है peltigera में, जैसे Gliocapsa है, it is a unicellular algae, blue green algae है, nostoc है, it is Rivularia है जो कि filamentous form of lichens में present होता है, और जो और मेंबर प्रेजेंट है इसमें एल्गी के दैट इज ऑफ क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी लाइक क्लोरेला, ट्रिबॉक्सिया, सिस्टोकोकस एंड प्यूरोकोकस, एंड आउट ऑफ these this one that is ट्रिबॉक्सिया is the most commonly found green algae in case of lichens.
So this layer is either continuous or maybe break into patches and serves the function of photosynthesis. ये जो algae की layer है that may be continuous जैसे यहाँ present है, otherwise it may be presented in the form of patches, small patches की form में present हो सकता है. And the function of this layer is photosynthesis. ये help करता है photosynthesis में, to making food for the thallus. The next layer is the medulla. It is present just below the algal zone और ये बना होता है loosely interwoven thick walled fungal hyphae से. ये जो hyphae होते हैं loosely interwoven होते हैं with large spaces. इसके बीच में बहुत बड़े बड़े spaces present होते हैं and they form the prosenchyma, and it gives the appearance of prosenchyma in which the individuality of hyphae is not lost. ये कंप्लीट मिक्स करके एक नया स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, दे आर लूजली अरेंज्ड और इससे जो एक सिंगल हाइफा है उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है, इंडिविजुअलिटी लूज नहीं होती. एंड द नेक्स्ट लेयर, द लास्ट लेयर इज द लोअर कॉर्टेक्स. इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ थैलस और ये जो लेयर बनी होती है इट इज़ अगेन मेड अप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफे जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ अपर कॉर्टेक्स. और जो ये हाइफे होते हैं दे मे बी अरेंज्ड इन परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ थैलस. इनकी जो अरेंजमेंट है वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है ऑन द सरफेस ऑफ थैलस. और कुछ एक जो हाइफे हैं फ्रॉम द लोअर सरफेस दे एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं एंड पेनिट्रेट टू द सबस्ट्रेटम, और सबस्ट्रेटम में पेनिट्रेट करते हैं एंड दे functions as roots like structures, और इन roots like structure को कहा जाता है rhizines that I have already told you in the previous slide. So this is the lower cortex. जो lower cortex में fungal hyphae हैं they are compactly arranged और ये जो arrangement है that may be perpendicular or that may be parallel to the surface of thallus. और कुछ एक hyphae lower surface से penetrate करते हैं substratum में और ये जो hyphae हैं they works as roots की तरह काम करते हैं और जो term हम इसके लिए यूज़ करते हैं that is rhizines. So this is all about the heteromerous type of thallus in case of lichens. So this was all about for today's discussion. If you have any questions and queries and any suggestions, you can give it in the comment section. Thank you. Have a great day.